Good evening, everyone. Warm welcome to the session. I hope everybody can hear us. Very warm welcome to the session, everybody. Let us check for it if everything is working. I hope everybody can hear us. Great. So let's start with the session here. And the agenda for the day is, as you all know, we're going to talk about the IP BBA strategy, right? So we're going to talk about how things would be, क्या किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए, and what will be the process like. That is what we're going to discuss today. So for all of you, we are there. We have got Girish sir with us, जो आपकी help करेंगे. Quants, maths, higher mathematics, होगा नहीं होगा. I mean, you have been asking these questions like umpteen number of times. आपने बहुत सारी बार पूछा है, सर हाई मैथ्स में भी कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, सर हाई मैथ्स का मतलब क्या रहेगा, टॉपिक्स होंगे नहीं होंगे. आज गिरीश सर इस सब चीजों का समाधान कर देंगे. गिरीश सर, आई एम श्योर आप ये क्वेश्चन को का समाधान करने के लिए, दिस इज व्हाट द बिगेस्ट क्वेश्चन द स्टूडेंट्स आर गेटिंग, और क्या परसेंटेज रहेगा, क्या परसेंटेज नहीं रहेगा, राइट. देन जो मैम, वेलकम टू द सेशन. This session is again going to be a difficult task for you because यहाँ पे students they primarily would be looking for, मैम ये communication का क्या रहेगा, right? So yes, they'll be looking for what is this about the communication. They'll be looking for ये business and general awareness and how does it go about it. So that is what again a question. And then after that I'll also be helping out with the English section. कि English section को क्या क्या चीज करनी है, कैसे attempt करनी है, क्या hierarchy होगी, and what exactly that you need to handle, right? So if everybody can hear us, I would request you to just drop in a hi for me. अगर आप लोग हमें YouTube पे सुन सकते हैं तो एक बार जरा hi drop करें at the chat, ताकि हमें पता लगे सब कुछ ठीक है, so that we should proceed then, right? And for all the students who are here for the first time, I would request you all to please make sure that you subscribe to this YouTube channel and make sure that you like this video, so that any next video which we talk about, either the CUET or might talk about AILET, all kind of information, fresh first time information that should reach to you at the earliest, right? Hi, thank you Abhishek, thank you for dropping in a hi for us. ठीक है, चलिए then let's start with the session here. गिरीश सर, आपके हवाले सब कुछ. अब आप बताइएगा कैसे चलना है, कौन में कहाँ चलना है, क्या करें नहीं करें, arithmetic as they call it. So how should we be interpreting this arithmetic? Sir, all yours. Okay, so logical reasoning and maths में क्या होने वाला? तो very first thing is, तो maths तो QA नहीं होने वाला, right? सबके लिए जो एक अच्छा फैक्टर है जिससे सब खुश हो जाते हैं सुन के, QA नहीं आने वाला, राइट. बट सी यहाँ पे यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि QA के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 or 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस, वो भी होंगे आपके बेसिक मैथ्स से, राइट. सो बेसिक मैथ्स से सम क्वेश्चंस कैन बी देयर, वो होंगे लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में. That means you can expect one question from percentage, or either it could be from time and work, time, speed, distance, profit, loss. Very easy question, simple question. Even जो हमारे knowledge primer का level है, उससे way easier question, right? You can expect very basic. Like I'm taking one example. In I guess 18 or 19, there was one question that was A do a piece of work in 10 days and B do in 20 days. दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? This was the question. So अगर आप QA के question expect भी कर रहे हैं, तो this will be the difficulty, right? So generally QA के section यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है? So in logical reasoning, what we have total 25 questions, right? From this logical reasoning part. And the good thing is, this is the part ना जहाँ पर आप 25 out of 25 बहुत easily score कर सकते हो, because इसका logical reasoning वाला part बहुत ज़्यादा difficult नहीं होने वाला, right? IP का generally logical reasoning part difficult नहीं होता है, right? Yes. Good evening, everyone. Okay, so difficulty की सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं. Difficulty पेपर की क्या होगी? पेपर की difficulty आपकी होगी easy to moderate, right? कोई भी difficult question पेपर में नहीं होने वाला, easy to moderate. You'll find all questions of difficulty easy to moderate. ठीक है. Second thing, total 25 questions will be there. Now बात करेंगे topic, very important thing कि कौन से topics से questions ज्यादा होने वाला है, किस part का weightage ज्यादा होगा. अगर अभी मुझे रिवाइज करना तो कौन से टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए इन लॉजिकल रीजनिंग, राइट? सो आई विल टेल यू कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस ज्यादा, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा होने के चांसेस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस, राइट? सो अगर आप प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर पेपर अगर आपने देखे हैं आईपी यूनिवर्सिटी बीबीए के, तो आपने देखा होगा पेपर जनरली बहुत ईजी आता है, ठीक है? तो मेक श्योर
आपने अगर हमारा नॉलेज प्राइमर कंप्लीट किया हुआ है, प्लस आपने मॉक्स हमारे जो आईपी के कंप्लीट किए हुए हैं मॉक्स, एंड प्लस क्लास हैंडआउट्स एंड ऑल दी क्लासेस प्लस क्लासेस, इतना किया हुआ है, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर योर आईपी एग्जाम लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, करेक्ट। सो टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले, सिलेबस तो आपका ये हो गया, आपको कितना करना है, बस अगर इतना आपने किया है तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं होने वाला है, राइट। सो टॉपिक कौन कौन से होंगे, सो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। So very first is number series and alphabet series. So this is one of the favorite topic of IP University. So generally ये IP के आप सारे एग्जाम में number series and alphabet series से you'll minimum find 3 to 4 questions, and वो भी question बहुत ज्यादा difficult नहीं होंगे, right, basic questions. So make sure कि number series and alphabet series के सारे questions आप लोग solve कर लें. You can expect 3 to 4 questions from this topic. And after number series, you'll find one more topic, very important topic, coding and decoding. This is again very important topic. Last year there was, I guess, 3 to 4 questions from this topic only, coding and decoding, and all the questions were very easy, right? So आपको ये नहीं सोचने, जितना आपके क्लासेस में डिस्कस हुआ है ना कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसी लेवल के क्वेश्चन you'll get in your exam, right? At least अभी जो टाइम बचा उसमें क्या करना, जो क्लास नोट्स है उनको प्रॉपर रिवाइज कर लेना है, राइट। आई होप सभी ने क्लास नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। तो मेक श्योर कि अभी जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम में आप लोग क्या करो, क्लास नोट्स को रिवाइज कर लो, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरली आईपी के बीबी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक नाउ, सीक्वेंस। So sequence में you will find questions like, sequence में कैसे question आने वाले, so sequence में you will find कि आपको कुछ words given होंगे, right, you will find some words, उन words का आपको sequence करना होगा, like आपको ऐसे कुछ words given है, interview, probation period, increment and GD, right। अब इनको एक sequence में आपने arrange करना है, right, कि पहले भाई इंटरव्यू होगा, जीडी होगा, इंटरव्यू होगा, देन सिलेक्शन होगा, प्रोबेशन पीरियड होगा, देन प्रमोशन होगा, राइट। सो ऐसे वर्ड्स आपको गिवन होंगे, उनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करने को पूछा जाएगा, एंड दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। जनरली आईपी में इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जिसको आपको कुछ सम वर्ड्स विल बी गिवन, आपको उनको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा, राइट। सो मेक श्योर ऐसे क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लें, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हम, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्यूरिंग क्लासेस भी आपको बताया मैंने कि दीज आर दी कॉमन टॉपिक्स जिनसे सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री से कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, फैमिली ट्री से कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, राइट। फैमिली ट्री से सिंपल क्वेश्चन यू विल फाइंड लाइक देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, राइट, there are 2 female and 2 married couples, 3 generations are there, and some more instruction will be given, right, and आपको उसके basis पे अपना family tree draw करना है, and then you'll find 1 or 2 questions on the basis of the diagram. Means बहुत lengthy question नहीं होने वाला, छोटा सा question होगा, and उसके basis पे you'll find 1 or 2 question only, right, or you can expect question related to pointing to a photograph type or introducing someone type. केवल ये 2 categories generally IIT में पूछी जाती हैं. Very first one is puzzle based, second one is introducing someone or pointing to a photograph type problem, right? One liner questions. And now next topic. Okay, directions. So directions is again very important topic. ठीक है, directions में से you can expect 2 to 3 questions, and direction के questions simple होने वाले, बहुत easy. अगर last year आपने देखा, very common type for IP is, let's say east is called west, north is called south, then what will northwest called? I hope ऐसे क्वेश्चंस आपने हमारे हैंडआउट में देखे होंगे and during classes आपने सॉल्व भी किए होंगे, तो आपको बहुत इजीली पता होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है. And second type you will find that based on shortest distance between any 2 points, right? Like
I started in the south direction. After 10 kilometers, I took a right turn, then a left turn, and so on. Data is given, right? On the basis of this, they will ask you, with respect to initial position, in which direction you are moving now. ठीक है. So ऐसे simple questions आपको direction के basis पे मिलने वाले direction chapter से, और you'll find 2 to 3 questions from this particular topic. ठीक है. Next, arrangement. So फिर से मैं repeat करने वाला, arrangement में कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट नहीं आएगा. आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है, राइट? सो मेक श्योर कि कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट की ज्यादा प्रैक्टिस आपको अब नहीं करनी है फॉर आईपी बीबीए. ठीक है, वहां पर सिंपल अरेंजमेंट का क्वेश्चन यू विल फाइंड, और डेफिनेटली यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक अरेंजमेंट, बट वो क्वेश्चन बेस्ड होगा ऑन सिंपल अरेंजमेंट ओनली, राइट? सिंपल अरेंजमेंट केवल आपको प्रिपेयर करना. ठीक है, आई होप वो आप कर भी लेते होंगे, बिकॉज आपको अभी टाइम हो गया तो आप वो बहुत कंफर्टेबली कर लेते होंगे सिंपल अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, ओके, देयर आर सम क्वेश्चंस. क्वालिफाई आईपीयू बीबी एंट्रेंस. ओके, ये सारी बातें हम करते हैं अभी, राइट? ठीक है, सो हाँ, जस्ट you need to revise the concepts, right? Okay, so next topic is order and ranking. Order and ranking में generally during classes we discuss किया है sequence and series. जब हमारा chapter था तो वहाँ पर there was one topic order and ranking, उसके बारे में हमने discuss किया था order and ranking के questions को कैसे solve करते हैं, right? So I hope आपको इसका basic idea होगा. If you have any doubt about this particular topic, order and ranking, because मेरे पास बहुत सारे requests आते हैं related to this topic, तो make sure there is one video in our playlist, right, with the name of order and ranking in our playlist of YouTube channel Pratham Test Prep. So वहाँ से there is one video order and ranking in logical reasoning playlist. So you'll find this topic. I guess 20 to 30 minute ड्यूरेशन है उसका. So वहां से आप ये ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज एनालॉजी, और you'll get minimum 1 to 2 questions. You'll find 1 to 2 questions from this topic, right? So this is again important topic, analogy, an easy topic. This is very easy topic, right? Okay, now what next? So एक बार क्या, एक बात ध्यान से समझना, आईपी में क्या होता है ना, जनरली देखो लास्ट 2 ईयर से 19 and 20 की मैं बात करूं तो आईपी ने डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, राइट? एंड 21 में आई गेस 6 to 8 क्वेश्चंस पूछ लेते डीआई से, राइट? सो क्या होता है, आईपी मुझसे पहले सिलोजिज्म बहुत ज्यादा पूछा जाता था, करेक्ट? सो लास्ट ईयर सिलोजिज्म से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, राइट? सो क्या करना, जितने भी ये मेन टॉपिक आई एम टेलिंग यू, तो आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके जाना. यू विल फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम सम टॉपिक्स ओनली. ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स आएगा, लाइक लास्ट ईयर सिलोजिज्म से क्वेश्चन नहीं था, उससे पहले 2 ईयर तक डीआई से कोई क्वेश्चन नहीं आता था, राइट? बट लास्ट ईयर 2021 में डीआई से 6 to 8 क्वेश्चंस वर देयर. ठीक है, तो मेक श्योर कि ये सारे टॉपिक, एंड साथ में और क्या टॉपिक प्रिपेयर करना, नेक्स्ट वन इज सिलोजिज्म. दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अगर आप 19 या 20 या उससे पहले के पेपर में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते थे, राइट? सो दिस ईयर आल्सो यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन, एट लीस्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. सो मेक श्योर इसको भी रिवाइज करके जाना है, राइट? देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? यू विल फाइंड लास्ट ईयर 6 to 8 क्वेश्चंस वर देयर. ठीक है, 6 to 8 क्वेश्चन, तो समझ सकते हो इसका वेटेज क्या होने वाला है. लास्ट ईयर के डीआई की अगर आपको एग्जैक्टली डिफिकल्टी नहीं पता तो मैं आपको लास्ट ईयर के डीआई की डिफिकल्टी बताता हूँ बीबीए में, इसके बाद देन विल डिस्कस. ठीक है, लास्ट ईयर बीबीए की डिफिकल्टी क्या थी? See, one table was there, right? Let's say some data is given here. I'm just taking one example to understand कि क्या difficulty होगी आपके DI की. Let's see, here some data is given. This is for 5 students. Their marks are given A, B, C, D, and E are. They are 5 students, right? Let's say A got 1050 marks, B got 1100 out of 15, C got 1200, and D got 1500, and so on. This is the data, 1500 out of 1500, let's suppose.
राइट. देन आपसे सिंपल ऐसे पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ A's मार्क्स एंड B's मार्क्स. दिस वाज द क्वेश्चन लास्ट ईयर इन DI. सो DI का ये लेवल था लास्ट ईयर. तो मेक श्योर DI के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सभी जरूर कर ले, बिकॉज इसमें छोड़ने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला. बहुत डिफिकल्ट वो वाला DI नहीं आएगा जो बीकॉम ऑनर्स में आता है. बीकॉम ऑनर्स की DI का लेवल डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू BBA वाली DI. सो मेक श्योर DI में आपको जो भी क्वेश्चन दिखेगा सारे क्वेश्चन डुएबल होने वाले हैं, इजी होने वाले हैं. ऐसा नहीं करना है कि DI देखा, कैलकुलेशन देखी और छोड़ दिया. आपको समझ आ रहा है ना कितना इजी क्वेश्चन. आपको जस्ट ये पूछा 1050 एंड 1100 का रेशियो क्या है. दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट. तो सारे क्वेश्चन इतने इजी थे. ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन इजी था. 6 to 8 क्वेश्चंस वर देयर एंड और आप DI को जरूर सॉल्व कर ले, ठीक है, अच्छे से कर ले. एंड नेक्स्ट वन, क्लॉक एंड कैलेंडर, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लास्ट 3-4 ईयर में अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं. 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर IP BBA एग्जाम, राइट. सो क्लॉक एंड कैलेंडर के लिए इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन क्लॉक एंड कैलेंडर, सो there is, I guess, 4 videos of 30 minutes in our logical reasoning playlist. So से आपको क्लॉक एंड कैलेंडर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है. उसके बाद आपको क्लॉक एंड कैलेंडर का कोई भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है ये वीडियोस देखने के बाद जो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, राइट. सो क्लॉक एंड कैलेंडर, आई होप अगर किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो डू वॉच दोज वीडियोस इन आवर प्लेलिस्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक नाउ इज क्रिटिकल रीजनिंग. सो इन BBA exam you'll find 2 to 3 questions from this topic, critical reasoning, but वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले, डुएबल होंगे. तो मेक श्योर इन क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ने क्रिटिकल रीजनिंग के. इसके लिए ना एटलीस्ट आपने हमारा हैंड आउट किया हुआ है एंड जो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास थी उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है. जस्ट आपको ये पता है व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट इज assumption, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट. अगर आपको ये पता है ना, you'll simple question you'll find which argument is strong, or you'll find which of the following assumption is implicit, or you'll find which is a valid course of action. बस सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आने वाले. ऐसे नहीं कि आपको पैसेज बेस्ड या बहुत लेंथी क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग में आएंगे. नो, you'll find one-liner questions in critical reasoning. Just they'll ask you which of the following is implicit assumption or which of the following is strong argument. So इस लेवल के क्वेश्चन आने वाले. मेक श्योर इसको भी बिल्कुल एग्जाम में छोड़ना नहीं. मैंने देखा बहुत से लोगों को क्रिटिकल रीजनिंग से डर लगता है, बट दिस इज वेरी इजी टॉपिक. देखो इसके लिए अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम है, सो यू हैव सॉल्यूशन. आप हैंडआउट देख सकते हैं. हमारा हैंडआउट जो क्लास नोट से आपको वो कर लो. उसमें भी प्रॉब्लम है तो यू हैव वन ऑप्शन ऑफ ई लेक्चर, राइट. आप ई लेक्चर देख सकते ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक स्पेशली. सो इसका अगर आप इतना कर लोगे ना तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके आने वाला है उसको आप बहुत ही इजीली हैंडल कर लेंगे एंड आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा, करेक्ट होने वाला है, राइट. Then what next? We have one more topic, data sufficiency. See, मैं आपको बताऊं last 2-3 year में data sufficiency से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, but this year you can expect because हर बार IP में कुछ ना कुछ सरप्राइजेस होते हैं. कुछ टॉपिक्स एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं. तो डेटा सफिशिएंसी इज वन सच टॉपिक जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मे बी यू कैन फाइंड 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, डेटा सफिशिएंसी also, right. And one more such topic we have, that is inequalities. You can also expect this year, right. Last year कोई भी क्वेश्चन नहीं था inequalities से, but this year you can expect questions from these 2 topics, inequalities and data sufficiency. So these are the topics generally. आपके जो 90% पेपर के क्वेश्चंस होने वाले हैं वो इन्हीं टॉपिक से होंगे. उनका लेवल क्या होगा? इजी टू मॉडरेट. तो मेक श्योर आप लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपकी क्लास में डिस्कस नहीं हुए. तो आप 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट. एंड मैं आपको बताऊं इसमें गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा भी अच्छे से किया है
तो आपका गुड अटेम्प्ट 22 प्लस होना चाहिए इन लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज दिस इज द पार्ट जहां जो स्कोरिंग होता है, जिसके बेसिस पे रैंक डिसाइड होगी, राइट। इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी पार्ट वीक है तो उसको लॉजिकल रीजनिंग के साथ बैलेंस किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज द पार्ट जहां पर 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस पॉसिबल है, राइट। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इसका एक डिफाइंड सिलेबस है, राइट। इस सिलेबस के आउट ऑफ द सिलेबस होने का कोई चांस नहीं है, राइट। सो इट डिफाइंड बाउंड्रीज है कि नहीं, बाउंड्रीज में यू विल गेट क्वेश्चन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी इसमें अच्छा स्कोर क्या होना चाहिए, S22 गुड स्कोर, राइट। वैसे तो आप 20 भी कर सकते हो, बट गुड स्कोर इज 22 प्लस, बिकॉज पेपर की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं होता, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा, यू विल फाइंड ओनली ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट ओनली। अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग को किया हुआ है, एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, तो 20 प्लस तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, एनी अदर डाउट रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग? यस, एनीवन? These 25 questions, I would say कि आपके approximately 18 to 20 questions will be doable in terms of आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे साथ प्रथम में वो questions जो है वो पढ़े हैं in any form, right? Be it in YouTube live sessions, be it in knowledge primers, be it in handouts or mocks, right? So अभी टाइम ये नहीं है कि मैम कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे दोबारा से सारा स्क्रैच से शुरू करना है, नो। राइट नाउ द टाइम इज कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप उसको रिवाइज करो, पिक द टॉपिक्स व्हाट यू वांट टू रिवाइज, और वहां से आप चीजों को क्या करो, वहां से आप चीजों को नैरो डाउन करना शुरू करो, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू कि there is a table in our geography chapter, right, and the table is about wildlife park and sanctuaries, okay, wildlife parks and national parks and sanctuaries से related आपकी table है. So I would suggest कि go through that table. It consists of all the important national parks, wildlife sanctuaries. वो सारी चीजें उसमें आपकी cover हो रही हैं, right? Secondly, you have been given an entire list of books and authors. आप अगर अपने knowledge primer में देखो, again I would refer to that. Books and authors की बहुत बड़ी list है, but what you need to focus on, you need to focus on the books or the authors which you have seen currently in news. आपने न्यूज में जो लोगों के नाम सुने हैं, न्यूज में जो बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए हैं, आप उन पे रेफर करो. डू नॉट गो और आप रैंडम सारी बुक्स पढ़ लो. टुडे ओनली आई रिसीव्ड अ टेलीग्राम क्वेरी कि मैम कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है. वी कांट टेल यू कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है. आपने इतने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, जो भी बुक्स प्रोमिनेंटली आपको बार बार दिखी है न्यूज में, वो आपको पढ़ना है. नाउ देयर इज दिस very generic doubt I would say, and as Praveen sir also said कि business awareness section होगा या नहीं होगा, right? So guys, there will be no separate business awareness section. आपका business awareness section जो है IB BBA के एग्जाम में नहीं होगा. So no BA section will be there. However, they will ask you business awareness related news either in the general awareness section or static business awareness news वो आपका management aptitude में पूछ सकते हैं. But you should not be expecting more than I would say 3 to 4 questions from the same. Not more than 3 to 4 questions. इतना ही आपका business awareness section में से आएगा. I'll let you know कि क्या क्या आपको business awareness में से पढ़ना है. But let's फर्स्ट सी की आपको स्टैटिक में से, या फिर अगर मैं जीए सेक्शन की बात करूं, किस किस चीज पर आपको फोकस करना है. सो लास्ट ईयर व्हेन आई saw the last year paper, and even if you see the last year paper, you will see Tokyo Olympics से क्वेश्चन पूछे गए थे उन्होंने, and even there were very basic questions. There was this one question related to टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, राइट. कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एक फीचर दे रखा था, एंड दे आस्क्ड यू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. सो अगर आपने नॉर्मल 11th में 12th में इको भी पढ़ा है, यू विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. नाउ एक जो कैटेगरी मैंने देखी, दैट वाज who's who वाले कैटेगरी था. उसमें एक क्वेश्चन था दैट फ्लाइंग सिक, हु इज रिगार्डेड एज द फ्लाइंग सिक. Now, ये I don't think so कोई हमको ऐसे बैठ के पढ़ाता है कि फ्लाइंग सिक कौन है, but we all know it is मिल्खा सिंह, right? So who's who से क्वेश्चन आपके आ सकता है. They can ask you questions about the
nicknames of cities. Nicknames of cities जैसे they can ask you which city is known as the city of dreams or which city is known as the city of destiny, right? Blue city, pink city, ऐसे city के names आपसे पूछे जा सकते हैं. Very miscellaneous questions they can ask you. Then apart from that, they can ask you questions from art and culture. Art and culture से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने मिलते हैं. फॉर एग्जांपल कथकली इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, और they can say Madhubani paintings are related to which state. So basic questions, but आप easily उनको attempt कर पाओगे, right? If I have to tell you about questions from Constitution, hardly there was one question last year from the Constitution part. However, जो आपके international organizations होते हैं, right? International organizations like आपके CUET members हो गए, right? We have BRICS, then we have SAC. ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू देयर हेडक्वार्टर्स. यूजुअली दे आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द हेडक्वार्टर्स. रेयरली ही आई हैव सीन कि उन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं रिलेटेड टू द चीफ्स और हेड्स, बट हेडक्वार्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. नाउ द कंट्रीज व्हिच आर इन न्यूज़, फॉर एग्जांपल रशिया, राइट? सो जो भी आपकी न्यूज़ में कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज का मेक श्योर दैट यू नो हु इज द पीएम, president, capital, and currency, right? So this was something जो IPBBA में भी देखने को मिला. This was something जो yesterday in CLAT exam also ये भी देखने को मिला. So ये चीजें ना बड़ी कॉमन सी हैं कि जो कंट्री बहुत ज्यादा न्यूज में है उसके पीएम, प्रेसिडेंट, कैपिटल, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछ लेते हैं. Now such type of questions are not current affairs questions. These are not related to the direct current affairs questions. These are the miscellaneous questions which are related to current affairs, the static miscellaneous questions, right? आपकी ये चीज हो गई है. Now what you need to do is, एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है सेबी से रिलेटेड था, बहुत इजी क्वेश्चन था. सेबी से रिलेटेड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? आई थिंक जितनी बारी भी हम क्लासेस में क्वेश्चंस करते हैं, क्लासेस में इको पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, सो उतनी बार हम सेबी का क्या करते हैं, वी ऑलवेज आस्क यू दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी. सो सच इजी क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड. यहाँ पर जो आपको डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है वो ये लग रहा है कि मैम कैसे होगा, बिजनेस अवेयरनेस आएगी या नहीं आएगी, मैम बिजनेस अवेयरनेस का एक अलग सेक्शन होगा या नहीं होगा, राइट? सो गाइस कैन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस नाउ. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो, बट जीए में आई वुड से कि डू नॉट जस्ट स्टिक टू व्हाट यू सीइंग इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स. नो, व्हाट यू नीड टू डू रिविजन के टाइम पर, एज आई ऑलवेज से कि ये टाइम है रिवाइज करने का. रिविजन के टाइम पे व्हाट कैन बी डन, जस्ट हैव a quick look or analyze the past year paper. You have to analyze the previous year paper to understand the language, कैसे questions पूछते हैं, right? Secondly, very important, as all the teachers are also saying, give mocks. Attempt as many mocks as you can. We have provided you a lot of mocks for CET BBA, right? So give as many mocks as you can. Then revise your class notes. Girish sir, as also Girish sir said, that revising the class notes, revising the facts, right? Your PPTs, your handouts, and your knowledge primer, right? If you're doing all these things, trust me, आपको बहुत आसानी से जो questions हैं वो आपको मिल जाएंगे, right? Now, again, I'm saying there will not be any different section of business awareness, but बिजनेस अवेयरनेस से रिलेटेड आपसे वो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और वो जरूरी नहीं है दैट इट विल बी ओनली इन द जनरल अवेयरनेस कैटेगरी. इट कैन बी देयर इन द मैनेजमेंट एप्टीट्यूड कैटेगरी एज वेल. ओके, सो अगर आपने जितना भी आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है वो आपने अच्छे से पढ़ा है, आपसे इजीली हो जाएगा. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम कीपिंग 18 to 20 doable questions. 18 to 20 बहुत easy doable questions होंगे. कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा हो. Yes, at times questions ऐसे हो सकते हैं कि आपको बहुत easy लगे कि अरे ये तो हमने पढ़ा है, but as you go on to the options, आपको options बहुत confusing लग सकते हैं. So it's better to read the language of the question properly and read all the options and only then mark the right answer. Okay. So that was from the static GK part, what you can study. Now coming to current affairs. Current affairs, I would suggest that
Focus on all the hot news, as we say, or all the news that made headlines. जितनी भी न्यूज ने आपकी हेडलाइंस बनाई थी, यू कैन फोकस ऑन दैट. अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आईपी का हमेशा रहता है दैट वेटेज इज मोर टुवर्ड्स द स्टैटिक पोर्शन. ना वो स्टैटिक पोर्शन का वेटेज ज्यादा कैसे है? बिकॉज वो करंट क्वेश्चंस पूछते हैं, बट दे आस्क क्वेश्चंस थोड़ा रिलेट करके, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि करेंसी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, फिर इंपॉर्टेंट ऑफ द चेयरमैन सीईओज हो गया, राइट, ऑफ द कंपनीज विच आर इन न्यूज. आपका स्पेसएक्स, टेस्ला, ये सारे कंपनीज आपके हो गए, इंडियन कंपनीज. अडानी इज इन न्यूज, राइट. देन वी हैव टाटा ऑलवेज रिमेन्स इन न्यूज. एयर इंडिया वाला जो आपका पूरा केस पूरे साल तक चल रहा है. सो ऐसे वाले क्वेश्चंस, ऐसे वाली न्यूज को पिक करके दे कैन आस्क देयर हेडक्वार्टर्स, where are the headquarters, they can ask their chairman, they can ask you about their CEOs, right. Headquarter, chairman, CEO के बारे में पूछ सकते हैं. There is this very special category जो in classes also we always ask you to focus on. Indians appointed, all those Indians who are appointed as the executives, as the chairman, as the CEO, as the MD in any foreign company, right? So Indians appointed in any foreign company. So questions on these high chances आपसे पूछे जा सकते हैं. कंपनी में हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, तो ऐसे वालों के ज्यादा चांसेस हैं आपके, right? So this was all about the general awareness section, guys. Is there any confusion in the general awareness section now? You may please drop in your doubts if you have any for the general awareness section. If not, then we can switch to the management aptitude part as well. So I think the GA part is quite clear to them. Right. Ma'am, before we proceed to the management aptitude, let me, because there's a question that is coming on our Telegram as well. So the students are saying, kya range rahega? What area, I mean, from what date to what date that one should go for the current affairs? Okay. So for current affairs, usually what we advise is go for past 8 to 10 months, right? Go for past 8 to 10 months. लेकिन in Pratham we have given you current affairs from April 2021 onwards, जो कि I think sir 12 months से भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, to keep them on the safer side. But now we know, let's be practical over here, इतने सारे months के current affairs revise करने is not possible. So my suggestion would be that focus on the months of 2022, right? Because these are the newer months, these are the latest months. So better to focus on these months. और 2021 के आप केवल hot news और जो news ने headlines बनाया था, just pick up those news and you will be sorted. IP इतना depth में जाके नहीं पूछता अगर आप 2022 के भी current affairs केवल करके जाओगे, because the weightage of current affairs is relatively less. Right? So there's no point of wasting too much of time over there, and इतना ज़्यादा stress लेने का need नहीं है. It's better 2022 के you do all the current affairs, right? 2021 का only the news which made headlines जो बहुत ही there are some news always जो बहुत blown out of proportion वाले situation में हो जाता है, तो वो आपको करना है. Apart from that, I'm sure आपने current affairs classes में जो हमने handout solve करे थे, if you are thorough with those handouts, I'm sure you are prepared for 80 to 90% of the current affairs questions. You are prepared for that if you have done the current affairs handouts. If you are enrolled with us from before your boards wala situation, phase 1 se agar aap hamare sath ho, to all the current affairs classes ke handouts. And if you have enrolled just now, if you are newly enrolled, in that case, current affairs handout plus monthly pre-recorded e-lectures. More than sufficient. You don't need to do anything other than this. More than sufficient for current affairs, sir. Very good. So from your conversation, there's one interesting point that we could realize is, if we look into the last 8 months topical issue, उसी में से current affairs भी बनते हैं और उसी में से static information भी बनती है. Yes, sir. So yes. That means अगर 8 months का कर लिया तो मुझे कुछ ऐसा नहीं कि history, geography की तरफ जाना है. Within that 8 months, I'll get something for the backward integration and for the forward integration. That's what I understand. Definitely, sir. Both the backward and forward linkages हो जाएगा if they are focusing on at least last 8 months.
Correct. Yeah. Absolutely. That's it. So, guys, that was all about the general awareness section, and I think उसमें उतना ज़्यादा शायद इन्हें confusion नहीं था. Now coming back to management aptitude. So we have been receiving a lot of queries कि management aptitude की classes लगाओ, ये करो, वो करो, and we have less time. So it is not technically possible for us also to, give you classes as such. So that is the reason why we are giving you pre-recorded lectures. Okay. Now this management aptitude, इसमें आपका बेसिकली क्या होगा मैम, क्यूए विल कम और नॉट. नितिन, आई थिंक आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है. ये पूरी चीज ऑलरेडी गिरीश सर एड्रेस कर चुके हैं कि क्यूए कितना आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो आई वुड सजेस्ट यू वंस द सेशन इज ओवर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट देख लीजिए. ओके. नाउ फॉर मैनेजमेंट एप्टीट्यूड सेक्शन इट विल अगेन बी 25%, 25 क्वेश्चंस आएंगे. नाउ सर, आई एम अज्यूमिंग कि अगर बीबीए का बच्चा है तो कॉमर्स स्ट्रीम से तो होगा, मेजरली दे विल बी फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम. इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, पढ़कर आए, राइट. एंड कुछ नहीं करना, अगर आपने इकोनॉमिक्स और बीएसटी किया है, ठीक है, तो ट्रस्ट मी कुछ क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्ट निकल जाएंगे. ऐसा है अगर आपने इकोनॉमिक्स या बीएसटी के बेसिक कंसेप्ट्स करे हैं, बेसिक्स ऑफ इको and business studies, if you have done these two things of 11th and 12th, कुछ questions आप easily कर सकते हो. So you don't have to stress too much about it. आप easily कुछ questions attempt कर सकते हो. Now coming back to what Pratham is offering you, Pratham ने आपको क्या क्या दिया, आपके PSIs में सारा available है. उससे पहले जाने से I just give you a briefing about the section or the topics जो basically आपका management aptitude में include होता है. So first they'll ask you questions about the management concepts. Management concepts आपका हो गया, and specifically the definitions of the same. Management concepts आपके definitions उससे related वो आपसे पूछ लिया जाएगा, right? They can ask you the basic communication skill questions. Basic communication skill के questions आपसे पूछ सकते हैं. Right, this is something which is there in our material too, so you can prepare from that. Then, as I've already mentioned, economic terms. Right, what is laissez-faire economy? ऐसे simple basic economic terms, ऐसी चीजें they can ask you. Then they can ask you questions about the marketing terms. Now, when I say marketing terms के साथ साथ आपको एक और चीज का आएगा जो कि है आपकी business terms, जो आपने बेसिकली अपना बीएसटी में पढ़ा होगा. बीएसटी के जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स है, बेसिक जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स है, उसमें सारी चीज हमने कर रखी है. नाउ बिजनेस टर्म से रिलेटेड यहाँ पर आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स की तरफ से भी पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ, अगेन कमिंग बैक टू वही जो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी कंपनीज आपके न्यूज में है, राइट, all the companies which are there in news, it can be any company, वही जो बहुत ज्यादा ऐसे मैंने बताया आपको, अडानी ग्रुप हो गया, आपका स्पेस एक्स हो गया, टेस्ला हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, एयर इंडिया हो गया, राइट. सो all those companies which are in news, so companies which are in news, just make sure to know about them, as in उनके आपके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, चेयरमैन, सीईओ, एमडीज, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो अगर आप ये चीज कर लेंगे आपका इजीली हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज है इसके साथ साथ, विच इज बिजनेस टर्म्स में ही आप एक चीज आती है, दैट इज पंच लाइन्स, टैग लाइन्स, राइट. दिस इज समथिंग जो आपसे पूछ लिया जाता है. अब ये ऐसा नहीं है कि आपसे टैगलाइन या पंचलाइन उठाकर लेट्स से डाबर का पूछ लिया, right? So this is just an example which I'm giving you. They will ask you questions on taglines and punchlines, either जो आपके recently launched vehicles जो हैं, जो 4 wheelers आपके launch हुए हैं, उनसे वो आपसे पूछ सकता है. They can ask you about the taglines and punchlines of the companies which are in news, right? Indian companies और international companies में जो Indians appointed हैं, सेम चीज है. बिजनेस अवेयरनेस का कोई डिफरेंट सेक्शन नहीं है. जैसे जीए में आपका बिजनेस अवेयरनेस रिलेटेड न्यूज है, उसी तरीके से दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट बिजनेस अवेयरनेस कहां पर, इन द मैनेजमेंट एप्टीट्यूड सेक्शन एज वेल. सो देयर विल बी नो एज सच डिफरेंट सेक्शन ऑफ बिजनेस अवेयरनेस. ओके, नाउ देयर कैन बी,
Now this is a possibility that there can be questions on trade and industries. उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं. सो जो करंट में जो आपका करंट अफेयर्स चल रहा है, जो करंट में आप पढ़ रहे हो, जो भी आप नॉर्मल 8 to 10 मंथ्स में पढ़ रहे हो, लास्ट 8 मंथ्स का पढ़ रहे हो, दैट वुड सफाइस. उससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. कमिंग बैक टू हाउ मेनी बिजनेस अवेयरनेस क्वेश्चंस कैन बी देयर, दे कैन बी as less as 1 or 2 questions or maximum 3 to 4 questions. उससे ज्यादा questions देने का उतना ज्यादा possibility नहीं है. Now, for all the students, those who are newly enrolled with us and those who do not have an idea कि प्रथम ने क्या क्या offer करा है in terms of management aptitude, so I'll just quickly take you through that as well. PSIs पर what is uploaded, management aptitude के offerings जो है from प्रथम. So we have few recordings which are uploaded. So MAT 1, right, is all theoretical. If you want to clear the facts, आप MAT 1 करके there is a recording, वो पूरा theory है, वहां पे we have explained you all the factual information. Okay, MAT 1 का ही there is another part of that which is all questions. So for all of you, those who feel like कि मैम क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ आता है, so you can go for MAT 1 questionnaire as well. And then the third recording we have is pre-recorded lecture is MAT 2, which is all about terminologies, जिसके बारे में मैंने ऊपर आपसे बात की कि कैसे कैसे terminologies related to business terminologies हो गए, आपके economic terms हो गए, right? Terminologies and questionnaire both. So in MAT 2nd, the third actually the content which we have for you, so we are covering the terminologies part. Okay, again coming back to BST, अगर इको किया है कुछ क्वेश्चन जरूर वहां से फंसेंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है. मैम will be was there direct questions from history or geography? Kishore, again GA is vast, to narrow it down to make a territory कि भाई इसी में से पूछा जाएगा, we can't do that. Last year paper के analysis के हिसाब से if I tell you there was no such direct question नहीं था. But again, entrances can get really unpredictable at times. Surprises हो सकते हैं. So surprise elements को इसके साथ deal करने के लिए what you can do, whatever we have taught you, just keep on revising that. And that is the only mantra that I can give you right now. कि कुछ as such नया उठाकर कहीं पर कोई book हो गया, कोई publication हो गया, यहाँ से वहां से करने की कुछ जरूरत नहीं है. बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगा दिमाग में. So always it is better to read whatever you have on your PSIs, whatever we have taught you, and just revise all the concepts. Just read and revise. That is the only thing that we can do right now. And do not stress too much of management aptitude section. आप easily कर पाओगे provided you have attended your current affairs classes, you have watched the Pratham's offerings regarding the management aptitude section. वो कर लिया, you'll be able to do at least few questions, I would say. So out of 25, अगर कोई बच्चे ने बिल्कुल भी management aptitude का नहीं पढ़ा है और सिर्फ यही पढ़ा है what we are sharing, I would say close to 17 to 18 questions तो आपके doable होंगे ही. very very easy questions होंगे जो आप कर पाओगे, right? कुछ questions definitely ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए I would say कि possibly you should have read little more of international trade or industries के बारे में, शायद वो questions आपसे ना हो पाए, but 17 to 18 questions should be doable questions. But again, as Girisha said, the LR section is relatively easy, right? So IP BBA के लिए GA and management aptitude I would say will be on the easy to moderate side. Few questions will be easy, few will be moderate, but you can cover actually अगर आपका LR strong है, so you can cover उस वाले section में ज़्यादा. The best part about these two sections is कि अगर आपको आता है आप मार्क कर दोगे, नहीं आता there is no point of wasting too much of time on that, right? So आया question पढ़ा, आया answer, you can mark it. और नहीं आता तो या तो educated guess मारो या elimination technique use करो. But keep in mind we have negative marking as well. Okay. Ma'am, I was asking because there were more history, geopolity mocks and less of CA. Yes, Kishore, that is the reason why we have given you mocks in this manner कि आपको हर तरीके का whatever IP gives you,
IB के मॉक्स में अगर आप देखोगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इवन कि स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करते हैं, वी नेवर नो, वो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी से स्टैटिक ज्यादा पूछ ले, बिकॉज देयर वर इयर्स इन 2017 और 18 भर भर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, बट अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, सो वहां पर उन्होंने केवल आपसे current affairs related questions पूछे, so we have given you a good mix of both the kind of papers in the mocks as well, right Kishore? So sir, that was all from my side as far as management and GA was concerned. Absolutely great, Jay ma'am. I think now the students are clear of communication का कितना part आना है and management का क्या portion होगा. They are now clear about general awareness as well. And obviously, students, we provide you with an array of mocks. So in mocks के अंदर अलग-अलग reference में होगा that whatever be the condition, you are well prepared for it, right? That is how we're going to go for it, right? Good. Thank you, Adam. Now let me take students to the verbal section here and okay. Let me take students to the verbal section here and let me help the students out, right? So boys and girls, here I'm going to help you out with how things would be and what you're supposed to work towards. Now, what you need to understand here is we did analysis, say, when did we do analysis? Okay, a day before, right? So we did an analysis which was about the IP BCom honors, right? We talked about कि वहां पे vocabulary सबसे ज्यादा होती है और direct vocabulary होती है, correct? That's what we said. But यहाँ का पेपर अब थोड़ा सा एक reference अलग होने वाला है, correct? So how would that be the paper and उसके अंदर क्या चीज करनी होगी? That's what I will be out with respect to the verbal section, primarily the English section as they call it, right? So let me go with this reference, and these are the topics that you will be getting. And when I'm talking about these topics are in hierarchy, right? Now ये ऐसे ही formation में आएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज, you would be getting good questions on vocabulary. You would definitely be getting good questions on vocabulary. इसके अंदर abstruseness अच्छी खासी होती है. Another pointer that you need to understand is analogies-based questions. We have seen that when it refers to BBA, they provide you with the analogies-based questions. When I refer to the analogies, primarily I'm talking about A is to B, what is to what, right? The kind of logical reasoning that you would have done, वही चीज vocabulary के reference में, वही चीज अरेंजमेंट के रेफरेंस में, दैट कैन बी एनालॉजीज. अभी थोड़ी देर पहले गिरीश सर आपको बता रहे थे दैट व्हाट वुड फॉलो फर्स्ट वुड बी इंटरव्यू, देन अपॉइंटमेंट, देन पीओ एंड देन सो ऑन. सो दिस इज व्हाट अगेन एन एनालॉजी. द सेम वैरायटी क्वेश्चंस हैव बीन टेकन इन द वर्बल सेक्शन एज वेल. Therefore, my recommendation for you would be that you should be comfortable with these analogies questions as well. Mocks में भी है, knowledge primer में भी है, इधर उधर भी है. मुद्दा भी ये नहीं है कि क्या चीज है क्या नहीं है, मुद्दा ये है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा आएगी, कौन सी चीज प्रचुर मात्रा में होगी, कौन सी चीज अबंडेंस में आई है विद रिस्पेक्ट टू अ पेपर, एंड व्हाट शुड आई बी टेकिंग इन माय स्ट्राइड. That is what a question here, correct? So you would definitely be getting questions on analogies. When I talk about English comprehension, their comprehension, when I talk about reading comprehension as they call it, English comprehension is not going to be, it's not going to be something extremely big here. It's not going to be extremely big here. पैसेज हो सकता है मॉडरेट लेंथ का हो. मॉडरेट लेंथ का मतलब हो सकता है दैट कुड बी अराउंड 350 to 400 words. I don't think that it should be anything more than that. It would have some 3 to 4 questions to go along with it. That's how you could go, right? Similarly, when I talk about the fourth section, which is about antonyms, synonyms, direct questions आपसे पूछते हैं synonyms, antonyms के. अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आसान होते हैं, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु वुड लव टू टेक it in a statement format. So statement में कई बार उनका inference समझ में आता है and then they do it. It depends on student to students. How are you prepared for it? And from there we can definitely go. Then we refer to as the fifth section, with fifth portion that you would have here would be referred to as fill in the blanks. So when I refer to the fill in the blanks again, fill in the blanks can be in the form of vocabulary. Fill in the blanks can also be in the form of prepositions, right? So do not think कि fill in the blanks सिर्फ और सिर्फ vocabulary के रेफरेंस में होती है. This can also be with respect to the prepositions. And let me tell you, अगर ये prepositions के रेफरेंस में होगी और fill in the blanks भरना होगा, तो इसमें ऐसा नहीं कि in on भरा और कहानी बात समझ में आ गई, नहीं. This would actually be in the form of the phrasal verbs, correct? So fill in the blanks जिसके बारे में मैं भी डिस्कशन करूंगा, तो ये fill in the blanks primarily आपके phrasal verbs references में होंगे, which is again the part of your knowledge primer you would have already gone through. Then they also give one question, or a maximum of that can be 2 questions. They would also be talking about maximum 1 or 2 questions, and that will be about the spelling mistakes. एक question, 2 questions से ज्यादा की आप आ ही नहीं सकते, या तो 0
or a maximum of 2. That does not mean that these are the kind of questions that you will be getting, but you would definitely be getting that. Now, primarily जो हमारा observation है इस पेपर को लेकर, we have seen that the spelling primarily comes with the spelling जिसको हम गलत बोलते हैं, जैसे कि vacuum की spelling हो गई, correct? जैसे perceive की spelling हो गई. So these are the kind of spellings that they generally look into, जिसको हम generally गलत बोलेंगे और गलत pronounce करेंगे. Pronunciation. So they primarily are going to give you something where we're going to pronounce it wrong. तो जहाँ पे हम उसे pronounce गलत करेंगे, वैसी spellings की generally they look for. Then when I refer to the seventh part, it is a spotting error. Spotting error primarily refers to as a grammar. Grammar का portion again इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, but when we talk about other papers, grammar होता है, इसके अंदर grammar बहुत ज़्यादा नहीं होगा. हाँ, होंगे questions. Spotting errors, you may have 4 questions, you may have maximum 5 questions, nothing more than that, right? Then looking at the 8th one, would refer to as a one-word substitution, which is actually the part of the vocabulary, but मैंने आपको बताया ये hierarchy के reference में maximum questions, and then I'm going down. So this is how that you'll get one-word substitution. You would again have 1 or 2 questions associated with it. Looking at the 9th portion, which is inappropriate use of words, जिसको हम word usage बोलते हैं, correct? So word usage इसके अंदर आता है, inappropriate use of word. When we refer to the 10th portion, it comes out to be as a phrasal verbs and idioms. Phrasal verbs and idioms भी आते हैं. They ask questions on the idioms of phrasal verbs, but ये बहुत ज़्यादा complicated aptitude variety नहीं होंगे. So when I'm saying they are not going to be the complicated variety, please understand this. Idioms are either the tier 1 idioms or the tier 2 idioms. Tier 1 idioms आसानी से समझ में आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर देखने पे आंसर चॉइसेस मिल जाते हैं. वैसे वाले idioms आपके पास आएंगे. Don't expect that you will be getting the tier 3 variety. Tier 2 तक आ सकता है. Something where you'll have to use a little brain. Something where you would have known those idioms before, you would be in a position to solve that. And then it comes out to be parajumbles. Parajumbles उनका कोई बहुत ज़्यादा favorable नहीं है, favorite नहीं है. Parajumbles के अंदर generally they give sentence jumble, right? I repeat, parajumbles के अंदर they generally give sentence jumbles as well. तो आप sentence jumble, parajumbles normal rules के साथ आपको करना है. छोटे से sentences होंगे, बहुत बड़े sentences इसके अंदर नहीं होंगे. Primarily, there would be a link in between, और इस link से, which is known as linking of the two sentences, वो जो mandatory pair होता है, अगर आप linking से निकालेंगे, इनके क्वेश्चन आसानी से निकल आते हैं. Answer choices with the way of elimination, you would definitely be in a position to find out the one, right? So primarily अगर मैं कहूँ तो ये 11 चीजें हैं. These are the 11 things that you're supposed to work with. Let me now talk about कितने questions हो सकते हैं to a maximum. So you get 2 questions here. Spotting errors, when I'm referring to, you might get 3 questions here. When I refer to antonym synonym questions, you would have 4 questions here. English comprehension, 4 questions here. Analogy would have 3 to 4 questions here. Vocabulary, again, this all is actually the vocabulary that we are talking about. क्योंकि वो किसी न किसी फॉर्मेट में तो होगा ही होगा, right? Fill in the blanks would have 3 questions here. One word substitution, 2 questions here. Inappropriate usage can be maximum of 2. Phrasal verbs, again, can be 2 to 3. Parajumbles can be 2. Now, this is how that you're supposed to take. So, if I'm talking about those 25 questions, ये कुछ इस तरह से इसका ब्रेकअप रहेगा. तो इस ब्रेकअप के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, राइट? तो ग्रामर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ग्रामर इसके अंदर बहुत ज्यादा आएगा. सो किशोर, प्राइमरीली आपको मैंने ग्रामर का ही बता रखा है, जेनेरिक मैंने पेपर्स का बता रखा है. एक चीज को चलो मैं आपको बताता हूँ, टॉप 3 ग्रामर की आइटम्स जो आपको पढ़नी चाहिए किसी भी पेपर के लिए, whether you are preparing for IIM, whether you are preparing for symbiosis, IP, CUET, whatever. तो सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा बताई हुई है, there is one known as a subject verb agreement. इस चीज के अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. दूसरी चीज would refer to as a pronoun errors, right? So pronoun errors. Number 3 that you would get here is a preposition errors. So these are the top 3 mistakes or top 3 questions जिसमें से सबसे ज्यादा questions बनते हैं. इसके बाद फिर जो 4th level पे आता है वो या तो आता है modifiers, you would either be getting modifiers or you will be getting adjectives or you will be getting adverbs. ये 4th level पे तीनों आते हैं. So this is how you are supposed to study. अगर मान लीजिए by default भी मुझे कोई study करनी है तो इस रेफरेंस में करना होगा, starting with the subject verb agreement, then there will be pronoun errors and then the prepositions errors and so on, right? I'm sure this point is okay and comfortable with everybody. So this is what the little differentiation for or the breakup for those 25 questions. Now, going back to the reference here, we just talked about कैसे क्या चीज होगी and कौन-कौन से sections में हमारा reference होगा.
तो सब फैकल्टी मेंबर ने बताया कि कितने कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो लेट अस अज्यूम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, एज जुई मैम said that there can be around 21 questions, right? Then logical and analytical ability, sir said 19 to 22 questions, तो उसमें भी मैं 21 ही लगाता हूँ. लेट मी अज्यूम इतने ही क्वेश्चंस हो पाते हैं. बिजनेस जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, अगेन आई से कुछ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, बिकॉज जैसे मैम ने कहा कि क्वेश्चंस या तो होंगे या तो नहीं होंगे, राइट? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग विद, राइट? सो व्हेन वी रेफर टू दोस, यू वुड डेफिनेटली बी अंडरस्टैंडिंग दिस. नाउ दिस वुड अगेन बी 21. लेट मी अज्यूम दैट. इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में से मैं अगर आप चलेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे, हो सकता है आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस हुए, कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए. लेट मी अज्यूम कि ये भी 21 का ही रेफरेंस है, राइट? So this would come down to be as 84 questions, right? This is what an 84 questions that you're getting. Now, let me go ahead from here. So 84, let me assume that this is what that your reference here, 336. But ये एक बहुत ही ideal score है. इतना स्कोर अगर किसी का आ जाए तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्कोर होता है. दैट इज व्हाट आई विल से. तो दैट मींस इसके अंदर आप कुछ गलतियां करेंगे. देयर वुड बी सम मिस्टेक्स हियर, सम मिस्टेक्स देयर. इसके अंदर भी व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज आपके हिसाब से 90% था, मगर हमें पता है ये भी 70% से ऊपर का एक्यूरेसी नहीं हो पाती है, बिकॉज वी आर ऑलवेज अंडर प्रेशर, राइट? वी आर ऑलवेज अंडर प्रेशर फॉर इट. सो उसका एक रेफरेंस इससे भी कम की तरफ आएगा, मगर बहुत ज्यादा कम नहीं होगा. बट हाँ, दैट वुड अगेन यू विल हैव टू गेट इनटू. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस और मैं कहूं कि मेरी 70% एक्यूरेसी है एंड देन आई नीड टू गो फॉर इट, दैट शुड बी अ गुड स्कोर. जहां पे आपके लेट अस से 70% एक्यूरेसी विद 21 ऑन ईच सेक्शन, 84 क्वेश्चंस दैट यू आर सॉल्विंग, देन इन दैट कंडीशन एक अच्छा स्कोर की तरफ जाएगा. जी मैम, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन समथिंग कि कितना मार्क्स हो सकता है, कितना स्कोरिंग इसका होना चाहिए? एनीथिंग विद दैट? Sir, I think what you said is actually also right कि ठीक है 21 हमने जैसे लेके चले हैं, but वही है कि इतना accuracy लाना is little difficult, right? Considering we have logical, we have business and general awareness, we have management aptitude, but yeah, above 70% I would say कि it will be a good score for them to get a good rank or a good college. Great, sir. Any idea for this? Yes, sir, exactly, sir. Accuracy, I guess, maximum accuracy, what we can expect is 80%. Correct. So that goes from 70 to 80% accuracy level. Exactly. So what I'm looking into this, or negative marks and positive marks, अगर मैं सब कुछ देखता हूँ, then I can assume कि 230 plus का score would be a good score to get into, right? 230 के एक अच्छे से स्कोर से शुरुआत हो सकती है और यहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए. फिलहाल इस समय इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या स्कोर क्या ना स्कोर. द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज कि आप अपनी एक्यूरेसी लेवल को पहले बढ़ाएंगे. जैसे हम कह रहे हैं कि 80% एक्यूरेसी लेवल होनी चाहिए, तो इतना तो बेयर मिनिमम करेंगे. नंबर 2, अनदर पॉइंटर इज बेयर मिनिमम ऑफ 20 प्लस क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चन के आसपास 80% एक्यूरेसी के साथ करेंगे, देन ऑब्वियसली यू आर अमंग द टॉप 25% ऑफ द टेस्ट टेकर्स, राइट? तो आप टॉप के अंदर आएंगे अगर इसके साथ आप चलें. फिर इस हिसाब से चीजें नीचे और ऊपर हो सकती है. मोरलेस ये चीजें बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग फॉर इट, प्रिपेयर्डनेस कितनी रहेगी, क्वेश्चन की टफनेस क्या लेवल आई है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सारी चीजें होती है. So this is what that you can derive from here, right? So one question is, so how can I cover maximum root words should enough for? Okay, किशोर, कुछ एक ना बेसिक रूट वर्ड्स है जो आपके नॉलेज प्राइमर के अंदर गिवन है. अगर आप वो बेसिक रूट वर्ड से शुरू करेंगे, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. फॉर एग्जांपल जैसे स्लीप का है, वॉक का है, एम्बुल है, वेंट का है. सो सम काइंड ऑफ बेसिक द रूट वर्ड्स इन देयर. आपको बहुत ज्यादा रूट्स के अंदर नहीं जाना, बट बेसिक रूट्स वुड सफिश फॉर यू. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 34-35 बेसिक रूट्स हैं. अगर आपको वो पता है, वो एक अच्छा स्टार्ट रहेगा आपके लिए टू अंडरस्टैंड. बट ऑब्वियसली वोकैबुलरी इज समथिंग व्हिच कैन बी डन एट एनी लेवल. कितने भी आप करते रहिए, हर बार कम लगता है, बट दिस इज व्हाट अ गुड स्टार्ट. और ये पेपर के अंदर आती है, राइट? 2 let's consider a high number of applicants.
Saksham, please understand on this. We are saying 230 to start with. That's what I'm saying. I'm saying 230 to start with. मैंने ये नहीं कहा कि ये स्कोर होगा और ना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी स्कोर को, राइट? सो ये सिर्फ एक मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से तो शुरुआत करनी पड़ेगी और अगर आप इसके नीचे नहीं हैं तो फिर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा. दैट इज व्हाट द ओनली थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू से. एंड अगर आपने ऊपर की चीज देखी हो, वी हैव सेड 80% तो बेयर मिनिमम है ही, विद अ 20+ क्वेश्चन इन ईच सेक्शन हैज टू बी अटेम्प्टेड, तभी आप कॉम्पनसेटरी टॉप 25% के अंदर आते हैं. ओके, sir, Girish, there's a question for you. It says, so please tell if data interpretation is coming. Yes. We have already answered that, but still, Girish, sir, एक मिनट लेके yes. See, last year there were approx 6 to 8 questions were there, right, from this topic, data interpretation. But DI say you can expect easy questions only, right? बहुत difficult questions नहीं आने वाले. आपने जो DI special 1 and 2 की क्लासेस अगर करी हैं, अगर उस लेवल के क्वेश्चंस आप कर ले रहे हो, तो दैट मीन्स आपको वो वाले DI के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाले हैं. आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल होने वाले हैं आपके लिए. और आई गेस कि वो छोड़ने वाला सेक्शन भी नहीं है DI. अगर DI आता है तो मेक श्योर आपके पास बहुत टाइम है, राइट? यू हैव आई गेस 2 hours and 30 minutes for 100 questions, right? So you have time because see, only logical reasoning is the part जहां पर आपको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, राइट? जनरल अवेयरनेस, मैम ने जैसे बोला था, जस्ट रीड द क्वेश्चन, आता है तो आता है, अदरवाइज उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप थोड़ी देर सोचोगे तो आंसर आ जाएगा, नो, राइट? बट लॉजिकल रीजनिंग DI इज द पार्ट जहां पर आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं सो दैट आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए, राइट? DI इज द पार्ट जहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, तो मेक श्योर DI को थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है? बट क्वेश्चंस इजी होंगे. Absolutely. Thank you, Girish, sir. Thank you for helping us start with this. So, boys and girls, I'm sure आप लोगों को ये सारी बात अब समझ में आ गई होगी. You know what you are supposed to do. Joy ma'am, before we leave, few words. Sir, I to just wish them all the very best and just do not get intimidated कि आज क्या-क्या बता दिया. And secondly, do not pick up anything new now because there's no time for that. It's better you revise your concepts, you revise whatever we have taught you, and trust me, we have taught you enough. You have learned enough कि आपको बहुत सारे questions कर पाओगे. So do not pick anything new. Just keep on revising, keep on practicing whatever we have offered you. And yes, all the very best. Girish, sir. Yes, but sir, just all the very best. And see, after exam you'll realize कि हमें तो बहुत कुछ आता था, एग्जाम में तो बहुत इजी हो गया, Correct. राइट? सो मेक श्योर कि जो जितना भी कंटेंट है उसको बस रिवाइज करके चले जाओ, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा. Absolutely. All So, the very best. what I can understand here is कि सर पेपर इजी नहीं होता है, हमारी प्रिपेयर्डनेस इतनी होती है क्योंकि हम इतने तेज से पढ़ रहे होते हैं, वो पेपर आसान लगने लगता है. There are so many mocks that we would have prepared. So that is the only thing, right? So, boys and girls, I'm sure आप लोगों को ये सारी बात समझ में आई होगी. What you're supposed to do and how we're supposed to do. Relax, chill. Nothing wrong is going to happen. You are definitely going to crack this paper. आप लोग prepared हैं. और अगर थोड़ी सी कमी पेशी है, तो आपके पास अभी भी कुछ दिन है. Look into those. What you can do. Look into what you need to do in there. हमने इसके अंदर सारा वो डिस्कशन किया है. So all the best to all the students. For all the students who have still not joined this channel, I would request you to please make sure that you subscribe to this channel and hit the like button, boys and girls. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार हिट कीजिएगा ताकि ये पता लगता है कि आपको ऐसा सेशन अच्छा लग रहा है. Therefore, then only we would be investing such kind of an effort here. रात को 8:30-9 बजे तक हम आपके साथ इसलिए बैठे. अगर आपको लगता है कि नहीं है, then in that condition we'll be doing something other important things than in that condition, right? Thank you for being there, boys and girls. Thank you, and all the best for your paper. Bye bye.